हमारे सारे जो लेक्चरर्स थे, जो हमारे जो सीनियर लीडर है, उन्होंने हमने समस्या की बात की, देश के अंदर जो हो रही है समस्या की बात उन्होंने की, लेकिन दो बातें रह गई है। और एक बात है कि समस्या क्यों हुई और समस्या का समाधान क्या है। ये हमारी 2 दिन के अंदर उसका कोई निचोड़ नहीं आया। थोड़ा सा इसलिए मैं मोहन जी साहब को रिक्वेस्ट किया कि 2 बातें करने के लिए मुझे थोड़ा परमिट कीजिए। बात यह है कि देश के अंदर एक है हिंदुत्व, और हिंदुत्व जो चल रहा है, और हिंदुत्व के कारण हिंदुत्व क्या है 90% हिंदुओं को पता नहीं है कि हिंदुत्व क्या है। और इसलिए हिंदुत्व का एक सेमिनार होना चाहिए, क्योंकि हिंदुत्व क्या चीज है जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक आपको इश्यू का भी पता नहीं चलेगा। हिंदुत्व का मतलब है हिंदू राज, यानी कि सामंत पद्धति राज। और सामंत पद्धति कैसे लाया जाए, ये इनकी एक व्यवस्था है, बहुत उसका डीपली है, बहुत डीपली अभ्यास है। हिंदुत्व क्या है, और हिंदुत्व के 2 मेन पाए हैं, और वो है एक जातिवाद और दूसरा है अंधश्रद्धावाद, यानी कि दर्शनवाद, पूंजावाद। ये दोनों उनको जीवित रखने के लिए सारी सिचुएशन रही है। हिंदुत्व का मतलब है कि सत्ता और संपत्ति और गुलाम प्राप्त करने का एक तरीका है, बहुत डीपली है। ये कम से कम आधा घंटा अगर आपको समझाया जाएगा तो आपके दिमाग में पूरा सिनेरियो पता चल जाएगा कि हिंदुत्व क्या है, हाल क्या चल रहा है। हाल कोई बोल रहा है कि मुसलमानों के पे अटैक हो रहा है, कोई बोल रहा है कि दलितों पे अटैक हो रहा है, लेकिन क्या है अभी किसी को भी पता नहीं। मुसलमान को इसलिए टारगेट किया जाता है हिंदुत्व जगाने के लिए। जब तक धर्म का मुसलमानों को टारगेट नहीं बनाएंगे तब तक हिंदुओं को हिंदुत्व का जागरूक नहीं होगा। उनको जागरूक करने के लिए उनको टॉर्चर किया जाए। एक ये बात है। दूसरी बात है, कोई बोल रहा है, आपको एक और याद करा दूं कि राजस्थान के अंदर एक छोटा सा बच्चा पानी पीने लगा और पानी पीने से मार के मैंने काफी लेक्चर दिए, काफी मैंने गुजरात के अंदर सेमिनार किया, और उन्होंने सबसे मैंने पूछा, भैया किसने मारा उसको? कोई बोलता है कि टीचर ने मारा, कोई बोलता है उसको फांसी मिलनी चाहिए, कोई बोलता है उसको सजा मिलनी चाहिए। मैंने इतना ही बोला, भाई ये टीचर ने नहीं मारा, उसको हिंदुत्व ने मारा है। और वो हिंदुत्व आज एक टीचर को आप सजा दोगे, कल दूसरा टीचर को जलाए। उनाकांड गुजरात में हो गया, यहाँ एक महिला को जिंदा जला भी दिया। ये खाली जातिवाद को बढ़ावा करने के लिए एक व्यवस्था है, एक सोची साची एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है। और वो मनोवैज्ञानिक पद्धति ऐसी है कि दिमाग के अंदर मारने वाले को ऐसा लगे मैं अपर जाति का हूं, और मार खाने वाले को ये लगे कि मैं दलित हूं, और उसको एहसास कराना है कुछ छोटा आदमी हूं। बस ये बात है। दूसरी बात, अभी मोहन जी साहब ने बताया कि कुछ पॉजिटिव वे में हम भारत बचाओ करेंगे। इसमें कुछ बातें संक्षिप्त में है कि हमें मूवमेंट करना। मैंने कम से कम 19 से 20 मुद्दे मैंने लिखे हैं, उसमें से कुछ मुद्दे आपके सामने पेश करता हूं। एक मुद्दा यह है कि अभी बीजेपी ने महंगाई इतनी हायर पे ला दी है, ये कोई हुई नहीं है, ये महंगाई बढ़ाई गई, और हमारी जो रोजी रोटी है वो घटाई है। मैं चाहता हूं कि हमारे भारत बचाओ के अंदर ऐसे 20 मुद्दे लेकर चले। उसमें पहला मुद्दा यह होना चाहिए कि आज की तारीख में जो श्रमिक परिवार है, श्रमिक लोग हैं, जो कर्मयोगी है, जो देश का निर्माण करते हैं, उनकी कम से कम पर डे 1000 होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ठीक, धन्यवाद।
नहीं, ये तो दो तीन मुद्दे बोल रहा हूँ और ज्यादा नहीं। और एक मेरा खास मुद्दा ये था कि हमारा मुद्दा ऐसा होना चाहिए कि हम उस मुद्दे को लेकर 60 करोड़ जो लेबर है, उन 60 करोड़ लेबरों को महसूस हो है कि भारत बचाओ के ने हमारे लिए कुछ सोचा है, हमारे लिए कुछ किया है, तो आपके साथ जुड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूं, जय हिंद, जय हिंद। बहुत सारे प्रकार जैसे भाया यहाँ पे जिनको मौका नहीं मिला अपनी बात रखने के लिए, ये सबको, क्योंकि प्रपात ऐसा है 1000 लोगों का सम्मेलन है और मैं देखता हूँ बहुत सारे बहुत अनुभवी हैं और सब छोटा छोटा मीटिंग करेंगे और लिखित चीज लाएंगे, कुछ जूम मीटिंग करेंगे, कुछ छोटा छोटा मीटिंग करेंगे अलग अलग जगह, तो सबको कैसा शामिल होगा प्लीज माफ कीजिएगा जो सब कह नहीं पाए। हमारे भारत बचाओ आंदोलन के नेता मोहम्मद साहब जी साथियों, अब मैं को इस मीटिंग आने से पहले ही एक पुराना गांधी पीस फाउंडेशन में 20 साल पहले होगा, ग्लोबलाइजेशन शुरू होके थोड़ा गांधी वाजपेयी का शासन चल रहा था, एनएपीएम की मीटिंग में मैंने बोला था, उस टाइम हमारा फोरम अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन भी चल रहा था, हम लोग उसमें भी था, एक भाषण कंक्लूड किया था, असली भारत का अस्तित्व का लड़ाई है। 20 साल पहले गांधी पीस फाउंडेशन में किया था, असली भारत का अस्तित्व का लड़ाई। ये 20 साल निकल गया है, ये भारत का ब्राह्मणवादी फासीवादी व्यवस्था साम्राज्यवाद से मिलके दुनिया का साम्राज्यवाद का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन चुका है। मैं भाषण बनाने के लिए इधर नहीं खड़ा है। ये जो शुरुआत आज किया है, ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है। भारत का मजदूर किसान बहुजन, मजदूर किसान बहुजन वर्षन में पीने के लिए अभी टाइम नहीं है। असली भारत इकट्ठा हो चुका है किसान आंदोलन में, उसको कुचलने के लिए इंडिया का सत्ता ने एक कदम पीछे लगाया, ये हमने समझा है। तभी तो भारत का असली भारत को इकट्ठा होने का प्रोसेस आज शुरू हो गया है। इसका रणनीति, इसका कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक पूरा क्षमता रखता है। जो रिसेप्शन कमेटी, मैंने लिस्ट पूरा पढ़ा, 122 नाम है, 5-6 संगठन है। कितना संगठन इधर आया? भारत के सारे वामबंदी, कोई वामबंदी आंदोलन इससे बाहर नहीं है। समाजवादी आंदोलन का मेरा लंबा भाषण करने का पुराना आदत है, माफी मांग रहे हैं। हम अभी मोदी साहब ने 4 पॉइंट में संक्षिप्त में हमारा पर्सपेक्टिव लेकर दिया, वो मैं नोट किया, तो मेरा अभी खत्म करने का और कोई रास्ता नहीं, इसलिए मैं दोबारा पढ़ के टाइम नहीं बर्बाद नहीं करेंगे। पहला पॉइंट, यूनिटी ऑफ दी बेसिक क्लासेस। हमारा मलयालम में ये शब्द है अडिस्थान वर्गम, मलयालम में, केरला में ये, सॉरी मैं लंबा नहीं कीजिएगा, प्रोफेसर साहब 5 मिनट बोल सकता है तो हम लोग तो 2 मिनट में भी खत्म कर सकता है, ब्यूरोक्रेट रहा है। सॉरी, इसमें भी टाइम जा रहा है। यूनिटी ऑफ दी असली भारत, उसमें भी एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। और उसके साथ साथ पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल कंसोलिडेशन ऑफ, हम लोग नया शब्द भी निकाल रहे हैं, दलित बहुजन सर्वहारा। हम लोग इधर का कोई कंफ्यूजन नहीं है, दलित बहुजन सर्वहारा। कॉमरेड्स, साउथ इंडिया का कॉमरेड्स के लिए मैं बोल रहे, प्रोलेटेरिएट शब्द का हिंदी का शब्द है सर्वहारा। मैं लंबा खींचने का आदत को काटते हुए मोहन साहब ने सेकंड पॉइंट बोला प्रियाम्बल को लेके,
VR कृष्णय्यर से लेके ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला डिबेट में बोला हुआ है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का, भारत का डेमोक्रेसी का अगर कोई बेसिक स्ट्रक्चर है तो दैट इज द प्रीएम्बल। ये हम लोगों ने बहुत पहले उठाया हुआ है, अभी उसमें भी ज्यादा बात करने। तीसरा पॉइंट था पीपल्स मूवमेंट। पीपल्स मूवमेंट डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, नॉट द प्रेजेंट एंड पास्ट, बट पीपल्स मूवमेंट। प्रेजेंट पास्ट तो हमारा ही है, भारत हमारा है। ये मैं इन लोगों को एक बात और बोलना चाहता है, ये राम का जन्मभूमि है, कृष्ण का जन्मभूमि है, इसमें तो डिस्प्यूट हो सकता है। ये बुद्ध जन्मभूमि भी है, बुद्ध कर्म भूमि भी है। वो बुद्ध का कर्म को, बुद्ध का प्रैक्टिस को हमने 21वीं सदी तक लेके आया है। हमारा लेटेस्ट एक्सरसाइज स्टैंड सामने है मार्टर, हमारा लेटेस्ट एक्सरसाइज मार्टर दे स्टैंड सामने भगत सिंह तो 20वीं सदी का है, 21वीं सदी का हमारा मार्टर है स्टैंड स्वामी। मैं ज्यादा खत्म नहीं, ये मोहन जी साहब का लास्ट पॉइंट था। ये हमारा अरुण कुमार साहब ने जो 1 घंटे का भाषण है, उससे ज्यादा है, उसमें कंक्लूजन में जो बात किया है उसी लेके मैं साहब को कहाँ तक छोड़ के आया। मैंने बोला था लेनिन का 2 किताब है, व्हाट इज टू बी डन एंड वेयर टू बिगिन। हियर वी हैव डिसाइडेड वेयर टू बिगिन, वी हैव ओनली स्टार्टेड, हाउ टू मूव फॉरवर्ड, व्हाट इज टू बी डन, हाउ वी विल ओवरकम फासिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म, ये भी तय करने के लिए क्षमता रखता है हम लोग। अभी आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लाल सलाम, इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय भारत। Comrades and friends, comrades and friends, Comrade CPM Red Star is participating in this program and associating with the Bharat Bachao for the last 3 months. So we are always with us. We are sure that we will be with the Bharat Bachao with all the anti-fascist program. And it is with that perspective our comrades from 11 states are participating in this program, 11 states. But I want to say one thing, that we proposed that the post-conference arrangement should be a platform. And the organizational structure here announced, we feel that that is not in conformity with that position. So we will cooperate with, we will join with all programs of anti-fascist programs of Bharat Bachao. And at the same time, we will, as comrades announced here, we will wait and we will see the future arrangements, advisory questions and our execute all announcements came. In conformity with that, to what extent we will be involved in that, that means we will, how far we will be part of that organization, that arrangement, that we will take accordingly. At the same time, since we are part of it, we are also assembled here for the last 2 days. Therefore, we are of the view that our party, CPM and Red Star, will work as a united front with the Bharat Bachao. Our deal will be like a united front based on the announcements here. And if further decisions and further interactions are there, we will cooperate. And in conformity with that, we move. And definitely, we will work to defeat RSS fascism, which is the biggest, the most reactionary, the worst form of inhuman system that ever existed in the world. So let's salute to all comrades. Thank you. Advocate of Supreme Court. I think that should be the last. और कोई कहने का चाहते हैं? Mr. Chairman.
This house profits from your very personal office presence. And I'm not saying this as a tribute, I'm saying this as a fact. Wherein a very insightful, learned person who has command over the Constitution is presiding this session. I have two submissions to make. One, which may not be very much liked by some of us, and the other, which may not be understood by most of us. My first submission is, when you are doing a program like Bharat Bachao, you are necessarily looking at popular support beyond the auditorium as well. Today, wherever two Dalits are beaten or bashed or killed, there are 10 Muslims who are beaten, bashed or killed or backed. It is the dynamics of politics that your first actions show to all you include in your mind. And unfortunately, for some reason, we could not include members of the Muslim community in the first instance of our National Council formation. Whereas, in the given situation, a Muslim representative should have been somewhere in a prominent position, like vice chairman or whatever, if you want the Muslim masses to come after, behind. मुसलमानों का क्या है? पिट रहे, कल भी पिटे, आज भी पिटे, और दलित आंदोलनों को उन्होंने साथ दिया, समर्थन दिया, जब सत्ता बांटने की बारी आई तो उनको पीछे रखा। तो आप क्या चाहते हैं, आपका फ्यूचर कैसा हो, दैट्स इन योर हैंड्स। वेरी गुड। You are a Hyderabad-based initiative, and I'm surprised you do not have people who can represent the community so effectively. मेरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का कॉन्फिडेंस लेने के लिए, मुसलमानों की बात करने के लिए इस वक्त बहुत बड़ा मौका है। आप अगर खड़े हो गए तो लाखों का जनसमूह आपके पीछे होगा। दूसरी बात is something which I will excuse the audience from following or whatever. Unfortunately, we have not been able to give much insight towards saving the Constitution, which is one of your major areas. Probably because we didn't have participants who had constitutional thought as their forte. Today, one of the ways of saving the Constitution is to address saving the federal structure of the Constitution. On the face of it, it sounds very ordinary, but that's not so. The federal structure is a salient feature of the Indian Constitution. The union government, headed by the despot that we have today, has exercised many misadventures in West Bengal, in southern states, wherein the central government has arrogated the rights of the state governments, violated the central-state relationships very expressly. Today there is a need that KCR, Stalin, Mamata, and these people, a couple of more of these chief ministers of the states of India, should be brought together, coordinated, not necessarily on a public platform, behind the scenes. Gopi can do it. The chairman can organize that. KCR can be a very important fulcrum for doing it. To embark on a concerted effort towards challenging the onslaught on federal structure of the Indian Constitution. That is very important. And for this, you have to put in a lot of thought. And it is very important to say, आपका अगर कोई दोस्त होगा, आपकी गलती पे भी ताली बजाते हैं, वो दोस्त नहीं। आपका कोई दोस्त होगा तो आपको मार्गदर्शन देगा, आपसे वो बात बोलेगा, आपको सुनने में चाहे कड़वी लगे, मगर आगे आपके रास्ते में आपको कामयाबी। मैं गोपी भाई की इसकी उस पर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स पर और उनकी नॉलेज से बहुत इंटरेस्ट हुआ, and I'm sure the movement will continue to have his leadership and benefit from it. And I'm very sure, and I look forward that the movement continues to grow under the most capable leadership
of Professor Mohanty. Thank you very much. Now, friends, we will conclude now. I will address three issues very briefly, beginning with the last submission. I think that was the most helpful, most friendly suggestion. And as somebody from within the core of the movement. You know, when we assembled here yesterday, right there, I said, we don't have limit on the dais or in the list. Then he said, no, we have some. They were not around. Then we desperately tried. Okay? And finally, she was able to save some of the council and so on. Anastasia. So we have lots of gaps. What we believe in, we do want to practice. And not tokenism, not symbolism. That is the ruling class strategy. We want actual participation, leadership also, which has from minorities, Dalits, Adivasis, women, they should be part of this. Gopal is a Brahmin, I am a Kaist. Okay? I think you are a Khatri, right? No, I am also. No. You mean he is a Brahmin? I am a Kaist. I have written the most devastating critique of caste system in Odisha and Brahman domination of Odisha. Okay? So they call me a traitor. Okay? Okay. So therefore this is very important. We will constitute the committee in such a way. Keep this in mind. More than symbolism, actual participation in leadership. We must have in the core leadership. And they politically, ideologically, culturally, value-wise, we all believe in it. You know that. We believe in it. But our structure is such that we are feminists, both of us. But we admit to our eminent feminist wives how structure has made us incapable of really 100% being feminist at home and in the family. There's no doubt about it, but they can also expose us. Sorry, one second. Let me finish. So that is one. So please keep it in mind. We must have very soon a fuller committee. So that is one, which is representative as a collective leadership. We genuinely believe in collective leadership, both in terms of identities and orientation. Okay, number one. Number two, it is a flexible group. Comrade James. It is a flexible group, and when you meet, I'm not able to meet personally very closely very much. You know the reasons. But they genuinely believe. Some will be very, 24 to 4/7 working. Some will be working as partners, some as united front, some as, those points are very imaginatively drafted. All kinds of relationship with solidarity. Therefore, because it is a full spectrum movement, the entire left, entire socialist, entire centrist parties, all non-BJP forces, all Gandhians, all NGOs who are opposed to the state, everybody. And the orientation is anti-fascist and pro-preamble. Anti-fascist and pro-preamble. That is second point. The third point is about the positive agenda, the critique and the positive. Both have to, I think, बहुत अच्छा बोले और परमार साहब भी and Matthew, you have to give your list, your elaborate list, and आप लोगों के पास जो है वो अपने स्तर में आप
उसको मोबिलाइज कीजिए, काम कीजिए और भारत बचाओ सेंट्रल कोऑर्डिनेशन को आप लिखिए कि हमको ये मदद चाहिए, हम इस तरह इकट्ठा काम कर सकते हैं. It should be both ways. I know Telugu became the official language of the convention. But I respect Hyderabad as the center. You know, about 10 years ago, some of us met in Hyderabad. We thought we will issue a Hyderabad initiative to defeat RSS BJP. It is a all India initiative. Even though such a large group came from Telangana, we salute you. Telangana people have always please remember, your initiative is to facilitate the all India movement. And I'm so glad. I think next to Telangana, the Odisha group was also quite significant. And Tamil Nadu, Gujarat, and UP, we have people from everywhere. Therefore, please remember these three things we have agreed. Composition has to be fuller and representative. Number two, solidarity will be flexible and with full confidence of many kinds of solidarity. And third, from all India to local, local to all India. All forms of give and take and joint solidarity function. And you just have to send your proposal. I don't चले जाएंगे तो क्या हम भारत बचाओ के बैनर के तले वहाँ प्रोग्राम कर सकते हैं और कैसे करें? क्या जैसे आप आज टीम बनी है, हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे कोई टीम बना सकते हैं, उसका बारे में थोड़ा ये जो हरियाणा और कोई any such questions एक हम जहाँ शहर से आए, शहर में सिविल सोसाइटी खड़ी करे, इसके अगेंस्ट करिए बस. हाँ जी बिल्कुल. Yeah. So now finally, yeah. On this, my suggestion is you make the proposal, send to Bharat Bachao that we propose to hold a meeting on this. We want your full support in any way, or you just give your solidarity message to us and we will organize this. Just you send an email to Bharat Bachao. So it has to be both ways. Just as he sought you out and invited you, they sought you out. Similarly, you seek out and establish this linkage. Finally, I think I request Dr. Gopinath to give some concluding remarks and thank everybody and then we will close. Thank you, sir. The points which he raised, as you all know, the Indian society is highly complex. By all means, all human activities in India is complex. And we know the shortfalls of the committee formation. It is not at all a full committee. It is only just a symbolic committee which we declared. We need some more inputs from different states. As Haryana friends said, we need some more inputs from regarding individuals. You know, the state is very cleverly dealing with all of this. State, I mean, the power that we have. So we have to be very careful when we are following this Bharat Bachao national policy. We know actually we have been talking to one person in Hyderabad from Muslim minority community. He could not turn up. And we also had, there is in Nellore district, one of the Andhra Pradesh districts. Actually, we gave we entrusted the duty to organize the district meeting by a Muslim.
And there are people who are not Christians in this. There are people, there is no person from Buddhist community. There is no person from, except, we don't take Jagmohan Singh as Sikh. We don't take it. So, friends, we will satisfy all your aspirations in formation of the committee. At the same time, design the programs according to the needs in a different, at the central level, at the state level, at the regional levels. And I don't want to take much time because our time is up to 6 o'clock only. It's already more than 6:43 now. And we'll meet once again. We'll form the national committee. We'll complete the national committee. We'll complete the district committees. Probably will take time. As our friend said, the program can be taken up by anybody who is interested, provided they must be careful about using the words. Using the words. Like, don't use the Hindu. Don't use the Hindutva. So public will not understand this. The difference between Hindu and Hindutva and the fundamentalism. The moment you say there is Hindutva, the majority, about 80% of the people, they think that we are targeting, we are abusing. That should not be. That is an opportunity for the fascists to organize themselves again, misguide the people. So we take all these things into consideration. We definitely probably hope we satisfy because we are taken from the leftists, we are taken from the minorities, we are taken from the religious minorities. We are not, as I said earlier, we are not against any religion. We are not against believer or non-believer. And the programs to be taken in the district level or in the state level, kindly communicate. And the people, you must be very, very careful who are the people you are taking. There are two words which I shall recall. One is manufacturing concept by non-Chomsky. And there is another word called manufacturing dissent. This is from Chomsky. Now the state is trying to use the manufacturing dissent. They will join you. They will join your activities. They create nuisance, and that will be the blame will come on to the organization. That we don't want to give up right now. Okay. So thank you very much all of you. I guess with all due respect to our elder people who have been spending their time for these 2 days, and not only 2 days, even earlier also. And all the people who came from different parts of the country, especially తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, ఎంత దూరం ప్రయాణం చేసి కూడా 2 రోజులు ఇక్కడ ఓపికగా కూర్చున్న వాళ్ళు, ఫ్రమ్ గుజరాత్, ఫ్రమ్ మహారాష్ట్ర, ఫ్రమ్ తమిళనాడు and from Odisha. 11 states they came. 11 states. And thank you all. We did not go to the press purposefully. And we know what is to be done in these directions. We thank on behalf of Bharat Bachao National Council the hall provided by the CPM party, Harkrishna Sujit Bhavan, and they are very cooperative. And we also express our gratitude to SHO Indra Prastha. Though he issued a notice to cancel this meeting, but ultimately he is cooperative to us. He cooperated a lot. Then we also express our gratitude to, probably I don't know whether to say thanks to judge or not. So the lawyers who struggled for nearly about 16 hours to get the permission from the High Court, and the people who served the food to all of us, the workers who have helped us here, the transport people who helped the people who are
stationed in different places in Delhi. And at last, I'm thankful to all of you because we did not have any untoward incident during these 2 days. People were expecting the state, especially the Chendiwala is expecting something to disturb, but we did not give any chance. Thank you very much. Thank you all. We'll meet once again. खत्म है मैं बोलने नहीं आ रही हूँ